हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज वीलुकअप, ठीक है, एंड कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज वीलुकअप इन एन एक्सेल फाइल। ठीक है। सो वीलुकअप को हम वर्टिकल लुकअप भी बोल सकते हैं, और यूज कैसे करते हैं मैं आपको आज बताऊंगा। सो उसके लिए आई हैव सम शीट्स, सम डेटा इन अ शीट। ठीक है। आई हैव this sheet in which I have invoice number, invoice date and due date, and these two data are not there in the sheet. Same, I have one more sheet in which मेरे पास है invoice number, date and some amounts against this invoice number. तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये taxable amount चाहिए, ये invoice number के against में। So कौन सी sheet से चाहिए? So against this sheet. ये sheet में एक taxable amount है, ये invoice amount है, मुझे ये दोनों data चाहिए against this invoice number in this sheet. So for this, if we are going to do manually, अगर हम manually करेंगे, like I will copy this invoice number and then I will search in this and then I will type it manually what is the value, then it will take a lot of time. So हम इसके लिए, for making this task easier to complete it in a minute, so we will use VLOOKUP. So VLOOKUP के लिए first, for any formula we have to use is equal to VLOOKUP. Okay. सो मुझे कौन सा वैल्यू लुकअप करना है? इनवॉइस नंबर, दिस वैल्यू आई नीड टू लुकअप। मुझे कहाँ पे लुकअप करना है, मीन्स इन विच टेबल आई वांट टू सर्च द वैल्यू। सो इन दिस टेबल आई वांट टू सर्च द वैल्यू, सो आई विल सेलेक्ट दिस टेबल। नेक्स्ट अगेन वी हैव टू गिव कॉमा, विच कॉलम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी इनवॉइस नंबर कौन से कॉलम में है? ये कॉलम में। सो मुझे चाहिए taxable value. So I have to count from this side. Invoice number is in first column. So we have to count 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Taxable amount is in 7th column. So I have to give 7 here. Again, comma. What I want? I need exact value. Exact this value I want against this invoice number in this sheet. Okay. So I will put 0. I will close the bracket and I have to press enter. See, I got this value. Okay. अगर हम मैनुअल सर्च करने जाएंगे एंड टाइप करेंगे तो आई हैव टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस नंबर इज 3116. सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो अभी अगर मैंने जब VLOOKUPs यूज किया, immediately I got this number without any delay, immediately. So I need the same data for all this invoice number. So no use for manual typing this formula again and again. Just drag this like this, you will get value against this invoice number without typing the formula again and again. Just I will drag this. Same I want for this invoice number also, so I will use VLOOKUP and I want to I look up this value. In which table I want to look up? So I want to look up in this table and comma, when I can see what is the column number of invoice amount. So I have to count from this column because invoice number जो है वो इस column में है. So invoice number first column में होना चाहिए. So I have to count, start my count from here. 1, 2 and 3. Invoice amount is in third column. So 3, 0. See, I got the data. Same. No need to type manually. Just drag it down. You will get the value. ठीक है. ये तो हमारा काम इजी हो गया, बहुत इजी हो गया. लाइक जो हम इसको एक एक इनवॉइस नंबर सर्च करते हैं शीट में एंड देन आई हैव टू टाइप इट मैनुअली. With a single formula I got all the data in a very easily. I got this. अभी क्या होगा, ये शीट में, अभी ये देखिए शीट है, ये शीट में अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे, लाइक टैक्सेबल अमाउंट कॉलम नंबर इज 7, this is 7th column, see the count 7th column. So अगर इसका कॉलम चेंज हो जाए, कॉलम नंबर अगर चेंज हो जाए तो क्या होगा, देन इस शीट में कोई चेंजेस होगा. So that also we will check.
I will add one column here. Okay, column add किया है, so maybe see this taxable amount changes to 0. so ये बड़ा इशू है. अगर किसी ने भी इस डेटा में छेड़छाड़ किया तो मेरा ये डेटा जो ये शीट जो मैंने तैयार किया है, ये VLOOKUP डाल के मैंने ये जो डेटा अभी निकाला था, ये डेटा चेंज हो जाएगा. सो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, जस्ट डू वन थिंग. ये शीट आपने जो अभी इस शीट में आपने जो फॉर्मूला डाला, अभी यहाँ पे फॉर्मूला है. ओके, सो आई विल डू वन थिंग. आई विल कॉपी दिस, सॉरी, आई विल कॉपी दिस. ये मैंने कॉपी कर लिया. एंड आई विल पेस्ट नॉट फॉर्मूला, आई विल पेस्ट ओनली वैल्यूज. जो वैल्यू मुझे मिला है सिर्फ वो वैल्यू मैं पेस्ट करूंगा. ओके, नो फॉर्मूला, ओनली वैल्यूज. सो आई विल पेस्ट ओनली वैल्यूज. सो आई गॉट दिस. मुझे सिर्फ अभी देखिए, पहले क्या था, मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल रहा था. जब भी मैं किसी भी सेल में क्लिक करता था मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता था. नाउ आई एम गेटिंग ओनली वैल्यूज. सो हाउ इट इज, वी आर यूजिंग VLOOKUP एंड ये हमारा काम बहुत इजी बना दिया. इन I think minute we got all the data for all the invoice number. Okay, so I hope you like this, you learned something, maybe yeah, may not. अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो maybe you learned something. Okay, so thank you so much everyone. I hope you like this video, or any doubt you have you can comment. I will reply to your comments. Okay, bye bye.